D. Nuki. And during the stage known as Web 1.0, websites were marked by the following type: typical webs. In this, the facilities was static pages, website content stored in file, guest books, emailing of forms. This was the then after that Web 2.0, this series came in, and it was called participative and social web. A Web 2.0 website may allow users to interact and collaborate with each other in a social media dialogue as creators of generated content in a virtual community. In contrast to the first generation of Web 1.0 era, website where people were limited to the passive viewing of content. Examples of Web 2.0 features include social networking sites, social media sites, Facebook, blogs, wikis, taxonomy, and video sharing through YouTube. So these services of all these becomes available when we was having Web 2.0 series. The key features of Web 2.0 include Foxonomy, a rich user experience, dynamic content that is responsive to user input. For example, a user can click on an image to enlarge it or find out more information. So this becomes more user participation, software as a service, and mass participation becomes easier. And this Web 2.0 series came in. When this invasion of Web 3.0 came in, and the services is a software that support computer to computer interaction over the internet. Web services are not new and usually take the form of an application program interface. The popular photography sharing website Flickr provides a web service whereby developers can programmatically interface to search for images. Combining semantic markup and web services can produce a Web 3.0 experience, that is application that can speak to each other directly and interpret information for humans. तो जो वेब 3.0 सीरीज आई इसमें बहुत सारी और रिसोर्सेज दे दी इन्होंने और सर्विसेज प्रोवाइड की जिसमें टेक्नोलॉजी एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगी. So the features of Web 3.0 are semantic web, artificial intelligence, 3D graphics, connectivity, and ubiquity. Now people are talking about Web 4.0, and that is also known as symbiotic web. The goal of symbiotic web is interaction between human and machines in symbiosis. The line between human and device will blur. Web 4.0 will interact with users in the same way that humans communicate with each other. स्टार्टिंग है वेब 4.0 का. अभी जो इसमें सर्विसेज हैं वो सारी की सारी अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट हो गया है और इन नियर फ्यूचर मे बी 5 years or 10 years time these services will be available. As you all know that we always interact with the machines also. आजकल हम लोग बात करते हैं ना, कंप्यूटर से बात करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से कहते हैं सीरी, उससे इंफॉर्मेशन हम मालूम कर लेते हैं, वो हमें सारी इंफॉर्मेशन दे देता है. अगर आप कोई चीज़ उससे पूछते हैं तो लिख करके जवाब देता है या बोल करके भी जवाब देता है. दैट मीन्स वी हैव स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद द मशीन्स and the machines are started interacting with us. So meaning is in future there will be less human interaction and more machine to machine interaction, human to machine interaction, and machine to human interaction will be there. But the Web 5.0 series is more interesting and more difficult will be this series, and the telepathic web will be present after the year 2030. जो न्यूज़ में है वो ये है कि वेब 5.0 जो सीरीज़ है सर्विसेज जो हैं 2030 तक आएंगी. And within this highly complex future web generations will be available. Some things such as brain implants will be very popular, and brain implant will give people the ability to communicate with the internet through thoughts. ये बहुत सीरियस काइंड ऑफ थिंग है कि अगर ऐसा होता है कि अगर कोई चिप हमारे माइंड में फिक्स कर दी जाए, इम्प्लांट कर दी जाएगी, और वो फिर जो है जो हम सोचेंगे मशीन वैसे ही वैसे करती रहेगी. बट दैट विल बी अ डिफिकल्ट टाइम विल आल्सो बी देयर, क्योंकि समटाइम वी thought positive, sometimes we thought negative, sometimes we have different kind of things in our mind, and the chip will communicate through this technology
through internet to others also. For example, अगर आपको बैंक से 10,000 रुपये आपको कहीं ट्रांसफ़र करने हैं, तो जैसे ही आप सोचेंगे, जो इम्प्लांट होगा, चिप वो काम करने लगेगा और वो इमीडिएटली आपके बैंक से 5-10,000 रुपये उस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा. सो मीनिंग इज़, ये जो नई रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वेब 5.0 में, जो कहा जाता है कि 2030 तक अवेलेबल होंगे, इनको भी हम बहुत अच्छी तरीके से, कंट्रोल्ड तरीके से अपनी रिसर्चेज में भी यूज़ कर पाएंगे. और जो लोग कंप्यूटर से भी होंगे, टेक्नोलॉजी से भी होंगे, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे, वो शायद इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग विल बी हैंडलिंग ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. ऐसा ना हो कि रिवर्स हो, कि टेक्नोलॉजी हमें हैंडल करे, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी को हैंडल करना होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सर्विसेज हमें अवेलेबल होंगी फ्यूचर में, उन सर्विसेज को हमें अच्छी तरीके से ट्रेन होना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो. एंड यू नो, यू ऑल मे बी अवेयर कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें मिसयूज़ भी होता है, और उस मिसयूज़ को रोकने के लिए हमें अच्छी तरीके से ट्रेन होना होगा. यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल ऑफ एजुकेशंस हैं, उनको टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट को बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट अपने अपने जो करिकुलम है उसमें ऐड करना होगा. तब जा कर के हम जो फ्यूचर टीचर्स हैं, जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं, उनको हम तैयार कर पाएंगे, ट्रेन कर पाएंगे कि वो अपनी रिसर्चेस को मैनेज कर सकें. नाउ कमिंग टू द रिसर्च पार्ट, ICT had effects on many facets of research. They can be classified into three categories, which include ICT application in pre-data analysis, ICT application in data analysis, and ICT application in post-data analysis. Generally जो research का part है, उसको हम 3 हिस्सों में divide करते हैं: pre-data analysis and data analysis and post-data analysis. ये जो काम है, ये researcher को, हम लोगों को करना होता है. Now, what do we mean by application in pre-data analysis? This is the list of data. I'll discuss into detail also. The most important thing is the article availability, thesis and dissertation availability, literature search, content search, literature tracking, quantitative data collection, qualitative data collection, and big data and its analytics. These are some of very important component for any researcher for pre-data analysis. So meaning is, generally हम लोग जो रिसर्च है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ब्रॉडली 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एक कहलाता है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, दूसरा कहलाता है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस. So now the next part will be ICT application in post data analysis. That covers references and bibliography compilation, article and thesis, dissertation, discussion among researchers, supervisors, supervisees, and during viva voce. And there are some plagiarism issues also. And the most important thing in post data analysis is journal manuscript submission. Generally, we are not good in publication part. इंडिया में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो रिसर्चर्स हैं, ये हम लोग सुपरवाइजर्स हैं, हाँ, जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं. कई बार जो रिसर्चर होते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, और वो इंडिया में ही कुछ बहुत अच्छे जर्नल में छप जाता है, नहीं अच्छे जर्नल में नहीं छपता, तो उसका जो है वो आगे रिसर्च मूव नहीं करती है. Now coming to the pre-data analysis, article availability. As you know that before internet era, journal articles in hard copy were very common, whereas journal articles in soft copy were very rare. In today's world of research, journal articles either online or in soft copy are easily available and accessible. This is made possible by internet technology, in which after those articles were being digitized and uploaded into appropriate repositories, researchers can easily and quickly access to those journals articles by open or secured internet access. Internet technology also can minimize unnecessary printing to preserve a greener environment. कहा जाता है कि रिसर्च का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर. एंड वी ऑलवेज फोकस ऑन रिव्यू ऑफ द लिटरेचर. जब भी रिसर्चर कोई रिसर्च करना चाहता है तो उससे कहा जाता है कि भाई आप
आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या एरिया है, किस एरिया में आप काम करना चाहते हैं। तो कई बार वो कुछ लेके आता है, sometimes they may be good, sometimes they may not be good. So we always suggest that you have to go to the library or internet and search what the people are, other people on national level and international level people are doing. तो वो जो आर्टिकल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वेदर आर्टिकल्स इज डिसर्टेशन और आर्टिकल इज इन द journal or article or e-journal, all this basically comes in the articles availability. Second important thing is the thesis and dissertation availability. In past, most of the theses are dissertation hard copies. They are confined with libraries in which researchers need to visit from one library to another in order to gain access to the required literature. Lately, many theses and dissertations are available online in soft copies accessible from internet or from universities intranet. This is made possible by internet technology, which enables researchers to easily and quickly access more theses and dissertations. Researchers also can print them as required, and this can also help preserve a clean environment. So generally, when I did my PhD in 1985, तो उस वक्त तो ये सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलती थी, ई कंटेंट नहीं होता था। तो हम लोग अपने लाइब्रेरीज में जो आसपास के शहर थे, जैसे आई डिड PhD फ्रॉम अलीगढ़, सो मुझे दिल्ली भी आना पड़ता, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जाते थे। जहाँ जहाँ भी एक्सेस होती थी वहाँ जा कर के रिव्यू लिटरेचर करते थे, थीसिस को देखते थे, कॉलेजेस में जाते थे जहाँ जहाँ भी एक्सेस होती थी, और उससे जा कर के हम जो हमारा रिव्यू द लिटरेचर है उस तरीके से वो पूरा होता था। लेकिन आजकल क्योंकि इंटरनेट है एंड ई डिजिटेशंस, ई कंटेंट इज आल्सो अवेलेबल। यूजीसी ने भी अपनी वेबसाइट पे थीसिस को लोड करना कंपलसरी कर दिया है, सब यूनिवर्सिटीज़ को वहाँ उनको लोड करना है। सो मीनिंग इज आजकल हमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ थीसिस एंड डिजिटेशन इज available, which was not previously available. Now, as far as literature survey is concerned, in past researchers need to perform manual search. The underline is manual search on hard copies of literature in libraries, whereby this is a tedious effort and the search results were limited. On the contrary, a lot of research material, literature, and artifacts today can be searched using internet search engines like Google, Google Scholar, Wikipedia, universities, and libraries, and internal search engines at all. So meaning is nowadays it is easier for a researcher to survey the literature available on the internet in the form of soft copy. Now, as far as content search is concerned, previously literature were in hard copies. Researcher needs to perform manual search and certain keywords or phrases by reading line by line of the literature or by getting photocopy of that. Whereas in today's world of research, researchers can utilize the soft copy literature search or find functions to search for specific keywords or phrases in which this is more effective and productive nowadays. Now, the important thing is literature tracking, how to track. So, past mein, as I said, we have to do manually. Nowadays, it is easier that we can do with the help of e-content. We can make folder, we can make cut and paste there and copy there. So this means researchers also need to create their own tracking mechanism. For example, in Word document or spreadsheet format to track and manage their reviewed literature so that they can reuse or refer to in future. With the advancement of information communication technology, researchers can still use the old approach, but more and more researchers now are using software like Mendeley, which can help manage, share, and discover the literature content and content that they had reviewed. Now, as I said that we have two types of data collection, quantitative and qualitative. So in the form of, in the first case, quantitative research, in the past data was collected from hard copy or email survey in which surveyed questionnaires were distributed to all the intended respondents for their responses. Lately, data can be collected by online, web-based or internet survey using Google document and SurveyMonkey or Elbit online survey enlisted the advantages as mentioned above. A researcher needs to assess whether his sampled respondent now or can have access to internet in order to fill up
द ऑनलाइन सर्वे। आजकल आपको पता है कि हम लोग सारा डाटा ऑनलाइन सर्वे के थ्रू